Hi, Zohra here. This is part 2 of my conversation with Fahad about affirmations, success, and abundance mindset. Enjoy. So very quickly, let's just look into neuroplasticity and the more you'll understand it, आपको फिर ये जो हमने बातें already की है ना, they'll start falling into place. So don't worry about it. So neuroplasticity basically works in this way कि uh, and the reason it's important to understand this process is ताकि you can understand how to re-engineer the same thing to make it work for you. So it's very simple. For example, Fahad, if I ask you, मैं आपको इंस्ट्रक्शन देती हूँ कि अभी 1 घंटे में you have to master the skill of juggling. ठीक है? I give you 3 tennis balls and I teach you one hand maneuver. ठीक है? And now you have 1 hour to master this skill. What do you think will happen for the first 5 minutes? Uh, I think I'd be failing for the Yeah, obvious you. reasons, And what are those obvious reasons? because I don't have prior experience, or maybe Yes, I think you're that going I to. do not know how to. Yeah, yeah. Yeah, you're going to fumble, right? Ball गिरेगा, hand eye coordination weak होगा. What happens is कि जब भी हम कोई न्यू चीज एक्सपीरियंस करते हैं, कोई नया स्किल सीखते हैं या कोई न्यू एक्शन करते हैं, what happens is a neuron pathway is created in our brains. और इसको बहुत सिंपल समझने का तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल आप अपने दरवाजे पे खड़े हुए, घर के दरवाजे मेन डोर पे आप खड़े हुए, आगे आपके सहन है और उसके आगे जो है गेट पे आपकी गाड़ी खड़ी है. योर गाड़ी इज योर डेस्टिनेशन, बट बिटवीन यू वेर यू आर स्टैंडिंग एट द डोर और जहां गाड़ी खड़ी हुई है, सहन पे देयर इज अ थिक ब्लैंकेट ऑफ स्नो. ठीक है? एंड बीच में रास्ता नहीं है. तो व्हेन यू लर्न समथिंग न्यू, what you're basically essentially doing, you're shoveling snow and you're creating a straight path between you and the car. ठीक है? तो शुरू में क्या होता है, यू फंबल, आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन नहीं होता क्योंकि जब आपका नया नया कनेक्शन बनता है ना, इट्स वीक, वो बहुत वीक सा होता है. बट आप द मोर यू रिपीट अ प्रैक्टिस, द मोर यू रिपीट एंड द मोर यू प्रैक्टिस एन एक्शन, क्या होता है कि वो कनेक्शन स्ट्रांग हो जाता है, इट सोलिडिफाइज. सो नाउ यू हैव अ वेरी फ्रॉम योर गेट टू योर डेस्टिनेशन. ठीक है? सिंपल एज दैट. The same thing works with our thoughts as well. कि जितना आप एक पर्टिकुलर थॉट अपने दिमाग में गोल गोल पूरा दिन घुमाते हैं ना, उतना आपका एक न्यू कनेक्शन बिल्ड होना शुरू हो जाता है. और द मोर यू थिंक अबाउट इट, द मोर इट गेट्स स्ट्रॉन्गर. एंड व्हाट हैपेंस विद इन केस ऑफ थॉट्स इज के when the neurons of thoughts get stronger, the mind starts believing and feeling convinced that that particular thought is true for you. For example, the thought of not of feeling like you're not enough, you're not good enough. If you repeat it often in your head enough times in different scenarios, if you keep repeating in your head, I'm not good enough, I'm not good enough, I'm inadequate, guess what's going to happen? Your mind is going to be thoroughly convinced that this being, Zohra Sultan, जिसको मैं सर्व करने के लिए इस दुनिया में आया हूँ, is not good enough, is not competent, is inadequate. And guess what's going to happen? You're not going to feel confident. You're always going to fumble. You're always going to think you आपको imposter syndrome होगा, आप perform नहीं कर पाएंगे. This Right? almost appears like a complete opposite of affirmations. I don't know if how much you Not the believe in opposite. that or That's not. exactly how affirmations work. Yeah, yeah, I not the mean, so opposite. what you're saying is that these are affirmations as well, but negative affirmations probably. Oh, yes, it's called negative self-talk. True. And what Ah, happens okay. is कि you either you pick this up. देखिए हम लोग कहेंगे कि यार मैं बैठे बैठे तो मुझे इल्हाम नहीं होता ना कि मैं अपने आप को बोलूं I'm not good enough. That's not the case. It's Hmm. basically with thoughts, it's the kind of stories you tell. तो अगर आपके जिंदगी में जो भी experiences होते हैं, it's the stories you tell yourself. So for example, like I told you, I struggled a lot with the social awkwardness, and I'm also a textbook overthinker as well, right? So imagine I went into हम 3 friends हैं, लड़कियां हैं, हम get together के लिए मिली, and I realized कि यार सारा तो बहुत प्यारी लग रही है आज. And suddenly now suddenly in my head I don't look good, right? उसके comparison में मैं अच्छी नहीं लग रही, वो तो बहुत ही अच्छी लग रही है. And for the next 5 minutes, I just can't get over the fact that her hair is on point, her clothes are on point. I love how she matched her jewelry. ये तो मुझसे ज्यादा अच्छी लग रही है. अब मुझे टेंशन होना शुरू हो चुकी है. Anxiety is coming in, right? And I'm like, नहीं, just, and you're trying to take it away. What happens is, because in the past I have felt inadequate, I have felt less than. The first thing that shoots through my head is the thought that you're not good enough.
इसके कंपैरिजन में यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट अ गुड। अब मेरी एंड व्हाट हैपेंस इज विद योर थॉट्स automatically trigger your emotions. So with that thought, now I'm starting to feel uneasy. And then if I prolong it, I start feeling anxious. और अगर मैं uneasy और anxious हूँ तो मेरा ध्यान तो conversation में नहीं है, मेरा ध्यान having मजे करने में नहीं है, मेरा ध्यान जो पड़ा हुआ है खाने पीने पे नहीं है। मेरा सारा ध्यान ये कि यार ये ज्यादा अच्छी लग रही है, एंड नाउ मेरा फोकस टर्न हो गया कि मैं अच्छी नहीं लग रही, मैं अच्छी नहीं लग रही। अच्छा, एक बड़ी अच्छी और प्रैक्टिस है जोहरा। राइट। हम्म। आई डोंट नो मैंने ये कहाँ से अडेप्ट की, बट आई थिंक इट्स अ गुड प्रैक्टिस दैट a lot of हम्म। people tend to do that, and I think we should let me know if you agree with it or not. But not everyone, क्या होता है, majority of people would think the same way that you just said. कि for example, अगर हम्म। किसी ने मैंने किसी को बोला, भाई किसी ने मुझे बोला कि भाई फॉर एग्जाम्पल हम्म। ये सूट लुक्स नाइस टुडे, सो कोई तीसरा बंदा जो सुन रहा होगा, ही माइट फील लाइक दैट कि यार ये इसको बोल रहे हैं, इट मींस हम्म। के सो एम आई नॉट गुड मैं नहीं इनफ, फॉर अच्छी। एग्जाम्पल. सो व्हाट आई डू इज आई रिटर्न अ कॉम्प्लीमेंट ईच एंड एवरी टाइम आई एम गेटिंग अ कॉम्प्लीमेंट. व्हाट आई थिंक इट या। डज इज आई एम जस्ट making the same the person um happy, or I don't know हम्म। if I'm putting it right, but just to give them the same happiness or compliment back so that he can feel the same way that I'm feeling with. So या। I over the years I wasn't very good with taking compliments. And even though I हम्म। didn't get many, but I whenever I wouldn't get very comfortable. I didn't know how to take a Let compliment. me tell you, you look very handsome today. Let I me be think the I've first one to compliment you today. Yeah, so what happened was, thank you very much, and I do believe that I look good. But what हम्म। happened was, so over the years, I think I got comfortable with it. So हम्म। when you do comfortable getting compliments, then you can probably Yeah, perhaps yeah, true, true. return it to And the them. So first the thing other is to, person can, yeah, please continue. no, 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 please complete your thought first. So it's just that कि in offices वगैरह में when somebody compliments you, I personally think that it's a very small gesture, because not everybody is हम्म। wired that way कि उसने आपकी तारीफ की, अगर आप उसकी तारीफ वापस नहीं करें तो he'll be still feeling good. अच्छा ठीक है, it's True, okay, मैंने उसकी true, तारीफ कर दी. true. I'm a person who likes to compliment others. I'm like that. I've always Ah, been that's that, and good. I'm very vocal That's good. about And it. you don't let it come to you. बिल्कुल। हाँ, और अगर मुझे कोई बोल भी ना यार ये ठीक नहीं लग रहा है, if somebody is critical of me, वो तुम्हारे बाल ठीक नहीं लग रहे, and हम्म। I take it and I say हाँ नहीं लग रहे होंगे. आई एम दैट हम्म। काइंड ऑफ पर्सन. मैं ये नहीं बोलता नहीं नहीं तुम गलत कह रहे हो, या मैं दिल में सोचूं नहीं ये जो चीज चल रहा है. नो, बिल्कुल। नहीं नहीं लग रहे होंगे, इट्स फाइन. आई कैन नॉट बी एट माई बेस्ट बिहेवियर एंड बिल्कुल। बेस्ट ऑल द टाइम. नहीं लग रहा होगा, सो बिल्कुल। आई विल जस्ट आफ्टर अ व्हाइल आई जस्ट गो एंड चेक माई सेल्फ आउट. ओके फाइन, हाँ सही कह रहा है, ठीक कर लेता हूँ. बिल्कुल। और नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा. और एंड अ हाँ लॉट ऑफ सही टाइम्स है। व्हाट हैपेंस इज, एंड व्हेन यू ओन दीस काइंड ऑफ थिंग्स, इट हेल्प्स यू with your personality development as well. I still ट्रू। remember, so I do these trainings on a daily basis. So what happened was there was a huge crowd at one event, and I just went in, and my glasses just broke. I'm not wearing one because of the reflection it gives in this light that I have here. So otherwise, I have these that I put on usually, whichever ones that. So you see the light over here. Yeah, yeah, So true. so I just got there at the venue, and whatever happened, I just took them on. I'm just cleaning them, and oh shit, they broke into two, and I'm Mm. like, oh, what I'm gonna do now? So I just went onto the stage, and I'm looking at everyone, and they think I'm just looking at them, just I was supposed to be, but actually what's happening is I cannot make out who is who. I cannot see Oh, right. really. और मुझे इतना Yeah. भी समझ में नहीं आ रहा कि लड़की कौन सी लड़का कौन सा, मुझे इतना भी नहीं दिख रहा उसमें. And I'm Oh, supposed to be that. the guy who's gonna present Yeah, this yeah. particular presentation, So and I you have no must have idea what. noticed कि nobody caught on to that, right? ये हमारे And दिमाग में होता है कि पता चल जाएगा, but nobody catches on to, because to be honest, जितना आप अपने हेड में फंसे हुए हो ना, दूसरे भी अपने दिमागों में फंसे हुए होते हैं. We tend to forget that. yeah, so what I Absolutely true. did was, And so this is इसमें because, तो hmm, इस तरह की चीजों में, so what you can do is, yeah, what I did was कि एक तो ये कि you do not have to let it overcome you and just drive you कि भाई yeah, इसको yeah, अभी yeah, अब क्या करना है. So what would you do? So you have to make the most out of what you have. So what I did was, मैंने कहा यार नजर तो मुझे आ yeah, नहीं रहा. So yeah, what I do, so I just looked around within my team, जितने मेरे टीम के लोग थे मैंने उनको देखा. There was a guy hmm, wearing glasses. मैंने उसको मैं so I quickly went over him. मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार what number is your glasses? He said it's this. मैंने कहा यार ये मेरा नहीं. I just tried them on, and I kind hmm, of started
viewing things better than I could without the glasses. So I thought कि यार I think I that has to do. That was quick thinking. So at True. least कुछ तो दिखे ना मुझे. So I was like, if you don't mind, can I? बिल्कुल बिल्कुल. He said, okay. But when I warned them and I went over there and but कहीं पे मुझे अपना reflection दिखा, I was like, oh, I don't look so good with these because those were almost like Glasses. मुझे एकदम से the first thing that caught up के Star Trek वाले glasses लग रही हैं. So I went onto Oh. the stage and everybody noticed that I did not have any glasses on and I'm wearing one now. So I just cracked the joke on myself कि ये मैंने Star Trek glasses किसी से borrow किए because mine broke. So I got a laugh and Exactly. I could connect with That's a them and very good technique. Laughing at yourself is a very good technique. इससे पहले किसी और को मौका मिले, you say it कि यार आज मैं nervous हूँ. Today guys I'm feeling a bit nervous. You start to talk and say यार I'm feeling a bit nervous. So just take it easy on me. The and minute you somebody who say can that laugh कि on him themselves, accept, yeah, if no, you तो accept आपको your कोई कुछ fear बिगाड़ right नहीं सकता away, फिर. it cools you down. True, absolutely, absolutely. So what you did was excellent. कि एक तो पहली चीज कि learn to laugh at yourself. आप पहले ही जोक कर लें, ठीक है, या आप पहले ही बोल दें कि ना दिस इज समथिंग. फॉर एग्जांपल, मेरी स्किन जो है नेचुरली बहुत ऑयली है, एंड समटाइम्स व्हेन आई एम आउट विद पीपल इट टेंड्स टू गेट वेरी ऑयली एंड आई गेट वेरी कॉन्शियस अबाउट इट, राइट. सो व्हेन आई नो फॉर अ फैक्ट कि अब आई डोंट हैव, मुझे फील भी हो रहा है बट आई डोंट आई कांट ग्रैब माय फेस पाउडर, आई कांट गो टू द वॉशरूम रियली क्विक, I say it out loud. जब मैं especially when it starts making me feel uncomfortable, I say यार listen, गर्मी कितनी हो रही है ना, my face just tends to get so oily. बस मुझे थोड़ा सा break मिलेगा, then I'll go get touch up. That's okay, and people understand it right away. They make you feel comfortable. Don't worry about it. And आपने एक चीज, बहुत दो चीजें आपने की. देखिए, you took control of your inner dialogue, right? कि अच्छा नहीं लग रहा, या somebody when you said कि somebody even says कि आपका शर्ट अच्छे हैं, आज बाल अच्छे नहीं लग रहे, what you do is, the reason you have peace within you is because you have taken control of your inner dialogue, right? And then what you did was कि you try to reframe it and you try to change that to make yourself comfortable. और दूसरे केस में जब आपको ग्लासेस आपके पास नहीं थे, when you were calm, ठीक है, you did not let your inner anxiety get in control of you, your inner negative self talk get in control Yeah, with you. जब आप उसको कंट्रोल में रखते हैं ना, तब आपका दिमाग चलता है कि अच्छा, अब नेगेटिव सेल्फ टॉक कंट्रोल में, अब सोल्यूशन क्या निकालना है. You get it, you get into a problem solving mode when you keep yourself composed. And it takes practice. It's not always easy. I sometimes give in to my anxieties. मुझे, मैं पैनिक करना शुरू हो जाती हूँ, मेरा दिमाग नहीं चलता है. But when I practice holding my composure, when I take stock of कि मेरे दिमाग में कहानी क्या चल रही है, is it negative, is it true, it's not true, Zora, it's not like this, it's like this. As soon as I calm down, I'm in a problem solving mode. This is what happens. So it's absolutely. exactly like that. You provided me a wonderful example. So yeah, that's how, even after, so if negative self-talk ruins you and pushes you to self-sabotage and do things that will hurt you, positive self-talk is something then that makes it better, that remedies this. जिसमें affirmations आ गए, अपने आप को calm down करने के लिए, confidence करने, again बात सारी यही है कि there is a state where you start feeling uncomfortable. You just have to have the presence of mind to bring yourself out of there into a safe state of safety and comfortableness. It's okay. अभी weird लग रहा है स्टेज में खड़े होके, nervousness हो रही है, कोई बात नहीं. 2-3 seconds गुजरेंगे, आप आराम से ठंडा होना शुरू हो जाएंगे. You're gonna feel relaxed about it. It's okay. I can do this. I've done this before. And a lot of just a last passing comment on confidence. Confidence is also about how much do you think you can do a certain thing, you can perform a certain act, how well you can perform a certain act, or how unwell can you perform a certain act. वही बात है कि अगर मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं, मुझे बोलना तो आता है ना, राइट, ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग में मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ. अदर पीपल्स नो एग्जैक्टली हाउ टू एंगेज द क्राउड एंड दे वेरी फनी एंड दे कैन थिंक ऑफ क्विक जोक. आई कांट डू दैट. इट्स ओके, कोई बात नहीं, मुझे बोलने तो आता है ना, मेरी नॉलेज तो है. क्या मैंने बोलना भूल तो नहीं गई हूँ? इट्स ओके, आई कैन डू इट. मुझे अभी नहीं आता, आ जाएगा बाद में, कोई मसला नहीं है. हाँ, मुझे अभी जो है इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बनने नहीं आता, या मुझे कैमरा के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने नहीं आता, कोई बात नहीं, अभी नहीं आता, सीख जाऊंगी मैं. दिस इट्स टू रिमाइंड योर सेल्फ कि आई एम कॉम्पिटेंट, आई नो हाउ टू लर्न, आई कैन फिगर थिंग्स आउट. इट्स ओके, आई विल बी फाइन, right? And oh, this reminds me. See, this is what I love about neuroplasticity. And let me tell you कि it's not just about कि scientifically आपका mind कैसे काम करता है.
I hope that I can show you and can shed light on the fact that your mind is a very 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 powerful tool. वो इस दुनिया में लाया इसीलिए किया है कि आपकी बॉडी एंड आपका माइंड के वो मिल के जो है ना दे स्ट्राइव टू गेट यू what you want. And I have a very interesting way to prove that. Is it okay if would you give me permission to to show you a live demo? Yeah, please go ahead. I'd love to see All that. right, and but you have to participate. Okay, Of course, I'm of going to give course. you instructions and you do it. Uh, I want Go you on. to put your hand forward like this, arm forward like this. Okay, sit comfortably. Put your Yeah. arm forward like this, relaxed. Now I want you to take it back, all the way back. Do you have space behind you, or No, there's I a don't. wall? I don't. Hold on. Oh Hold damn! on. Hold on. Hold on. Can Hold you on. just tilt your chair? Yeah, No, I think I can. Can I do that with my left hand? yeah, yeah, sure. Yeah, Anyhow, I think I can do that. Yeah. I'm going to ask you to take it all the way back, so you should have Yeah. some space. Okay? हाँ. And it's best if आपका जो mic है उसके ऊपर आप हाथ रख ले and then take it all the way back. ठीक है? So put it in front of your mic. Yeah. Yeah. And then I'll take it all the way back. जितना आप पीछे लेके जा सकते हैं. And stop when you feel a strain. Keep your torso straight. Yeah. Do you feel a strain? Yeah. Okay. Yeah. Can you mentally remember exactly how far your hand is? I think so. Yeah. You can remember? Okay. Now bring your hand back. ठीक है? And anyone who's watching this podcast, please try this at home. All right. Now just loosen it up a bit. थोड़ा सा shake your hands, shake your arms. Yeah, All right. relax it a bit. All right. Now put your hand again. Put your hand forward again. This time, I want you to close your eyes and I want you to picture and imagine कि आपका your arm is so ridiculously flexible and elastic कि when you take it back, it actually wraps all the way around your back. ठीक है? All the way All right. around your back. All All right. right, do you see it? All right. Now, keeping that image in mind, repeat after me. The muscles in my arm The muscles in my arm are super flexible. are super flexible. The muscles in my arms The muscles in my arms are ridiculously elastic. are ridiculously elastic. My arms can go all the way back. My arms can go all the way back. Repeat it once more. The muscles in my arms The are muscles very in my flexible. arms are very flexible. They are ridiculously elastic. They are ridiculously elastic. They can go all the way back. They can go all the way back. Open your eyes. Now take it back. Take it all the way back. Take it back, take it back, take it back. As far as you can go. Holy. Is it further than you? Is it further than you last Yeah, went? yeah. I can It's see way it. further. I can Even see if it. I mean, if I didn't have a wall over here, I think it could go Go probably. further, Yeah, right? it would. It definitely would. This is exactly why affirmations work. This is exactly why visualization works. This is exactly why meditation works. Your वही मैं आपको कह रही हूँ कि if this is not proof, and this is also why manifestation works. जिनको लगता है manifestation is a hoo-ha, and I'm not talking about from the वो वाला point of view के Asking the वो कौन सी universe हाँ हाँ for हाँ what you it need, is and it the entire yeah the universe will conspire exact to. yeah the secret I'm not talking about it in the secret way. Yes, it is about asking the universe, but the thing is कि every little जो आपकी जो जरा है ना, जो atoms है आपके हर body का जो minute fiber है, everything is working. This is a life example of that. Every fiber in your being is working hard towards getting you what you want. Did you just not now set an intention that my arms are flexible and they go all the way back? This is what you wanted? Did your not body Absolutely. give you that? Did your Yeah. not body respond back to that? Your brain included. Exactly that. And in a very Manifestation. tiny amount of time, Yes, probably yes, like 30 seconds or a yes. minute or whatever. Imagine what And positive self-talk can do for you. yeah, Imagine what manifestation can do for you. Manifestation does work. I'll tell you one thing interesting. ये जो podcast था, when we first spoke, I told you I've never done this before, right? ठीक है? I'm 30 something, 30 odd years, and for the past 2 decades, podcast मेरे जो है gravitational field के पास कभी नहीं आया. And let me tell you, I just past month, 2024, new year, I'm trying new things. January के महीने में I started making a vision board.
there's a picture of a podcast mic over there, and I had actually set it with the intention कि मैं podcast करूंगी या मैं कभी start करूंगी, and guess what? January 31st मुझे आपका message आया, you reached out to me, would you like to join my podcast? This is the universe bringing you to me. This is not random. You might say कि यार ये तो algorithm है, मैंने आपको search किया, आपका profile LinkedIn पे आया, फिर ऐसा हुआ. You can have 1,000 explanations. I am convinced, and I'm so happy that my vision board is already working. You teach people something that now they cannot unlearn, I'm glad and you that's brought it where up today, and I would want everyone watching this should, they should try this out, which to is try it, and if it works, put it in the comments. If you are into manifestation, if that's your thing, if spirituality is your thing, you believe that you are a higher spiritual being, that's what, put it in the comments. And that's why I said, Fahad, ke strive to become a conscious co-creator of your own life, because you can do it. आज आप अपना हाथ मजीद और नहीं पीछे लेके जा सकते अगर आपको ये सलाहियत नहीं दी होती, राइट? If God did not want this for you to happen. So when if this is a power that's available to you, if this is an opportunity that's available to you, who is at a loss if you don't decide to do it? You are, right? One thing I always remind myself कि अगर कोई चीज देखो, there are always things that you do know, and there are things that you don't know. You know what you know, you only know what you know, but you don't know what you don't know, right? बट अगर कोई चीज फ्रॉम दिस स्फीयर ऑफ डू नॉट नो अगर आपके अवेयरनेस में आ जाए ना, कॉन्शियस अवेयरनेस में, देन आई बिलीव इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू समथिंग अबाउट इट. So I hope that you'll do something about it, right? So I'm glad that you enjoyed this. And with this, I'll segue into some of the techniques that people can use to really re-engineer and to really ये जो आपकी ability है to create neurons and pathways and to convince yourself that you are better than who you are right now. You can use these techniques to help this turn this around, or to reprogram your brain, as they would say. One of them is selective attention. So I want to talk about some techniques that you can use. Neuroplasticity, some techniques that you can, some ways in which you can use neuroplasticity to reprogram your brain. Right? अब हमने discuss काफी कर लिया in depth में कि what kind of powers we have, what kind of abilities we have. So if you didn't know, now you know. And now let's figure out कि अब इस information का हम क्या करें. How do we make this work for ourselves? So one of the first techniques is selective attention. ठीक है? And selective attention is कि in a group of uh, numerous distractions. हमारी लाइफ में हमारी लाइफ अब इस तरह की हमारी लाइफस्टाइल हो चुकी है कि we are always constantly bombarded with distractions. So in a sea of distractions, you build the skill or the ability to focus your attention on what serves you the most, or what is good for you, in essence. So it could be the ability to focus on a specific issue in a sea of distractions, or a specific topic, or a specific event, or even on a specific choice of activity, or an activity of your choice. ठीक है, आप कोई काम कर रहे हैं, आप कितनी बार ऐसा होता है कि हम किसी काम में लगे हुए तो पर हमारा ध्यान बटा हुआ होता है. The ability to bring that attention back is called selective attention. Now, it may sound very simple in its definition, but इसका मकसद क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो ये है कि देखें, टोनी रॉबिन्स, आपने नाम सुना होगा, इज अ अमेरिकन, he's a very famous coach, right? He's a coach, he's a motivational speaker, he's a writer, and he's famously known for saying energy flows where attention goes. ठीक है, तो अगेन अगर आप सिंपल सा इसका फॉर्मूला है कि अगर कोई पॉजिटिव चीज है, अगर आप उस पर जितना अटेंशन दोगे, द माइंड एंड द बॉडी सेज कि यार जोहरा ने इस चीज पे फोकस किया, इसको और लाके दो, और ये चीज लाके दो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको क्रिएट करो, बिकॉज वी आर बाय आवर नेचर्स वी आर वेरी क्रिएटिव बीइंग्स. We are always involved in the process of creation, even when we are resting. Okay, but that's a conversation for another time. And secondly, ये कि for example, और अगर इसी तरह from in the same token, if you put your focus on something that is overly negative for you especially, तो वो क्या होगा, your brain and your body comes together and says, यार Zohra is focusing on what her सास said earlier in the afternoon. उन्हें बहुत ही rude remark किया था, and I'm not saying anything. My सास is a lovely woman. I'm just giving an example
कि भाई जोहरा का ध्यान जो है ना वो उस बात पे कि उनकी सास ने एक बहुत ही स्नाइड रिमार्क दिया था दोपहर में, तो उसका सारा फोकस इस पे है, एंड शी इज फीलिंग रियली बैड अबाउट हरसेल्फ। चलो इसको और दो, मल्टीप्लाई दिस, शी मस्ट बी डूइंग दिस फॉर अ रीजन, जस्ट कीप क्रिएटिंग, कीप क्रिएटिंग, कीप क्रिएटिंग। So you get it as simple example ये कि what you choose to focus on you get more of. So next time when you catch yourself, इसमें there's a lot of self awareness a person has to develop before he can even decide कि यार ये मेरे साथ मसला है, इसमें मुझे ये टूल यूज करना है। So उसमें माइंडफुलनेस भी आ जाती है, विल टॉक अबाउट दिस लेटर। बट ये होता है कि यू डिसाइड, इंटेंशनली डिसाइड व्हाट यू फोकस ऑन। आप ऑफिस में हैं, आपकी सुबह सुबह मीटिंग हुई है, और जो है बॉस बड़े गुस्से में, मैनेजर ने कहा कि यार यू गाइस आर नॉट वर्किंग टू योर ऑप्टिमल लेवल्स। यार उन्होंने ये बात तो मुझे देख के बोली, मुझे देख के क्यों बोली उन्होंने ये बात? और फिर पूरा दिन इवन आफ्टर द मीटिंग कहाँ उनका ध्यान चला गया, कहाँ आपका काम स्टार्ट हो चुका है, और आप पूरा टाइम यही सोच रहे हैं सर ने मुझे देख के क्यों ये बात बोली कि आप सब ऑप्टिमली काम क्यों नहीं आप नहीं कर रहे। एंड नाउ योर होल डे इज ruined बिकॉज you're thinking and thinking and thinking, and guess what, आपका काम कैसा होगा, आपका परफॉर्मेंस कैसा होगा, right? You're not helping yourself. So that's one thing. And that's the simpler version of it. Number two is selective attention also talks about, is also about consciously choosing what you consume. You are what you consume. You are what you eat. You are what you read. You are what you listen to. You are what information you consume. ठीक है? If it is true that you are the average of the 5 people you hang out with, then it's also true that you are average, you are an intellect average of what information you consume. So be intentional about that. For example, अगर आपका future self और आपका vision, because you are working on stepping into your better version, if your better version is the kind of person who is very deterministic and who is very action taking, decisive person, who is doing a lot of great things, who is a thought leader in their own field, why not? मैं अगर for example कि कोई लड़का है, his name is जहांजेब, ठीक है, and he has over 10 plus years of experience in sales and he has managed teams under him, and now he believes कि यार इससे ज्यादा भी तो कुछ हो सकता है मेरे लिए, I am going to be a thought leader in my field, ठीक है। तो if he is someone who is a thought, and there are people who are thought leaders already in the field, so if someone with a personality who is a thought leader who is talking about sales and everything, do you think जब वो घर जाता है the first thing when he turns his TV on he puts Big Boss? नहीं, राइट? ही सेलेक्टिवली चूजेस। अब मैं ये नहीं कह रही कि ए टाइप पर्सनालिटीज डोंट नो हाउ टू हैव फन और वो बिग बॉस आप नहीं देख सकते और मना है, आप कुछ भी देखो। ऑल आई एम सेइंग इज कि यू शुड बी सेलेक्टिव। जब आपका टाइम का वो कंस्ट्रेंट है ना, वी आर नॉट हियर फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, तो जब आपका टाइम लिमिटेड है देन यू आर बिकमिंग मोर चूजी अबाउट वेयर यू स्पेंड टाइम, what do you talk about, what do you consume, and what kind of people or things or activities that you choose to engage with. You become choosy about those things and you make it count because आपके पास इतना extra time नहीं है जिंदगी में, right? So that's also one thing that it talks about. इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि फर्दर अलोंग द लाइंस ये एक और चीज में आपको हेल्प करता है, वो ये चीज है कि इट इट हेल्प्स यू इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मीन्स जब आपके ऊपर कोई मुश्किलात आती है, कोई चैलेंजेस आते हैं, इट मेक्स यू मोर रिजिलियंट पर्सन बिकॉज यू आर चूजिंग टू, बिकॉज इट्स अबाउट कि आर यू रिजिलियंट और आर यू फ्रेजाइल। मेरे साथ कोई बहुत ही जैसे कोई बुरा वाकया हुआ है, कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, मे बी आई हैड अ फाइनेंशियल लॉस इन माई बिजनेस, आई टुक अ बेट और वो गैस मेरा गलत हो गया एंड आई लॉस्ट अ बंच ऑफ मनी एंड आई jeopardized a few people's jobs as well। ठीक है, इट्स अ वेरी हैवी बर्डन टू लिव विद, बट विल यू फोकस ऑन के आपका दूध का कार्टन जाया हो गया, वो कहते हैं ना क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, आर यू गोइंग टू क्राई ओवर द फैक्ट आपके पास अब एक दूध का कार्टन कम है? और आर यू द काइंड ऑफ पर्सन वो ऑलरेडी 3 स्टेप्स आप आगे, आपने नॉट ओनली डिड यू रिकवर योर लॉस बट यू इवन मेड प्रॉफिट ऑन इट? what kind of person would you like to be, right? It's in this concept called anti fragility के जरूर इसको गूगल कीजिएगा, it's a very interesting concept कि it talks about resilience and then a little bit more, it's a resilience plus, I call it a resilience 2.0, it's a resilience and a little bit on top of that, and that's the kind of person I believe someone would like to be where they can help themselves independent, and it also helps you with developing a very positive approach to life. What So was if what you're a was the generally term person, again?
एंटी फ्रिजिलिटी, All right. जैसे एंटी फ्रेजाइल कहते हैं ना, एंटी फ्रिजिलिटी, Okay. या so that's what it helps you with. And definitely the act of consciously steering away your attention to something that really needs your focus is both things. It's a decision that you have to make and a skill you have to develop. And it's not easy. अभी शायद explain करते हुए आपको ऐसा लगता होगा कि यार this is fairly simple. अच्छा यहाँ attention नहीं देनी, यहाँ attention देनी है. But that's not the case. uh, क्यों? क्योंकि देर आर अ लॉट ऑफ जो हमारे ओल्ड हैबिट्स होते हैं ना, वेदर दे आर हेल्पफुल और दे आर अनहेल्पफुल, हमारे जो ओल्ड हैबिट्स होते हैं, वी यूजली टेंड टू फॉल बैक टू देम बिकॉज दे आर वेरी फेमिलियर एंड बिकॉज दे मेक अस फील सेफ डिस्पाइट द फैक्ट कि दे डोंट सर्व अस. ठीक है, तो जब हम सबसे बड़ी स्ट्रगल फॉर पीपल व्हेन दे ट्राई टू टेक अप अ न्यू हैबिट इज दैट दे कैन नॉट कीप इट, they cannot they struggle with being consistent, and it's because you fall back into your old habits because they're very familiar. तो फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एग्जाम्पल दूंगी कि आप अगर यू मतलब आप फॉर एग्जाम्पल आप ऑफिस में हैं and आपने 1 घंटा जो है स्ट्रेट 2 घंटे बैठ के आप ईमेल्स पे और सब पे अपना काम कर रहे हैं, एंड देन यू डिसाइड कि यार अब मेरी बैक दर्द कर रही है, आई एम जस्ट गोना टेक अ क्विक ब्रेक. यू गो आउट विद द इंटेंशन कि मैं बस वाटर वाटर कूलर तक जाऊंगा, आई एम गोना हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, आई कम बैक इन 5 minutes, आई स्ट्रेच माई लेग्स. बट यू फाइंड दैट आपका दोस्त वहां खड़ा हुआ है और वो जस्ट अभी जो है ना फ्रेश फ्रेश गॉसिप सुन के आया मैनेजर के रूम से एंड ही वांट्स टू डिस्कस दिस विद यू. व्हेन यू गिव इन टू दैट, अब गॉसिप सुनना सबको पसंद है, लेट्स जस्ट इट्स अ गिल्टी प्लेजर, राइट? And you can't resist yourself. It's hot off the press, you're the first person who gets to hear it and you're like yaar sun lete hain. The time you choose to give in to this small guilty pleasure of yours, this choice that you make to engage in a इसको कहते हैं हम instant gratification. तो क्या होता है, आपके 30 मिनट वहीं निकल गए, आपके 30 मिनट वहां ज्यादा हो गए, 5 मिनट के ब्रेक के बाद आप के बजाय आप 30 मिनट्स का आपका ब्रेक हो गया बिकॉज नाउ यू आर हैविंग अ कॉन्वर्जेशन. आप जब तक वापस आते हो और अब आप 30 मिनट्स आपके चले गए, एंड एट द एंड ऑफ द डे व्हाट हैपेंस, यू आर टेकिंग वर्क बैक होम, मैं आपको right? एक मजे की Because बात you बताता हूँ. chose to indulge And in before a, that, I will ask you something as well. I'm yeah, sorry, I just cut you off. My question to sure, you sure. is, do you still No, 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 find not at all. gratification out of Hmm. these uh, gossip chats, whatever Yeah. those are? Well, don't judge me for it. Yeah, just be Occasionally, yeah, honest. yeah. Occasionally, who doesn't like getting involved in a juicy gossip, right? But see, I do understand that in terms of habits, yeah, we are also guilty of being the people who started as well. So I do not find myself interested in any sort of gossip anymore. I would say anymore because maybe a few years back I would, if I would see two people talking about something and I would perhaps want to know what they're Mhm. talking about. Now, in this point, at this point in my life, Mhm. it does not matter to me. It doesn't bother me. And it's one of those Yeah, things, I yeah. think ये It's a accumulated practice, is, right? सही बात है. आई थिंक ये इस तरह से हुआ है कि मैंने इस चीज पे अपने आप को डिसिप्लिन किया है कि देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स Yeah. हैपनिंग अराउंड मी दैट डू नॉट कंसर्न मी. उसमें एक और चीज भी है, Exactly. बड़ी Hmm. इंपॉर्टेंट चीज है जो हम प्रोफेशनली हमें हेल्प करेगा और पर्सनली भी करेगा इन आवर लाइफ, वो ये कि Hmm. वी नीड टू स्टॉप गेटिंग बॉदर्ड बाय व्हाट अदर पीपल आर गेटिंग इन देयर लाइफ. वट फॉर एग्जाम्पल किसी ने कौन सी गाड़ी Absolutely. खरीदी, किसी ने कौन सी ज्वेलरी खरीदी, किसने कौन से कपड़े बिल्कुल, लिए, किसको क्या प्रमोशन मिला, किसकी कितनी सैलरी है बिल्कुल, एट वर्क. बिल्कुल. यूजुअली क्या होता है, अभी कुछ टाइम पहले की बातें, पीपल वर डिस्कसिंग, समवेयर डिस्कसिंग, यार उसकी सैलरी इतनी है, मेरी इतनी है, इसकी इतनी हो गई. And somebody asked me, why don't you participate in this conversation? So I just told them straight up, I don't find it interesting. मुझे क्या करना है किसी से, I if I start Yeah, finding yeah, out what other people are getting, maybe yeah, they are yeah. getting it because they deserve it. Some way or another, if you are Hmm. getting something in life, that Yeah, simply means that you deserve it. From yeah. my perspective, you may not, but you are getting Hmm. it. That means you deserve. This is how universe works, right? Sometimes we think, okay, this is Yeah. unfair. Zohra is getting this, Hmm. but I'm not getting this. But it must have meant that she must have done something in the previous years of Hmm. life, जिसकी वजह से उसका Hmm. इफेक्ट ये हुआ कि she is getting it right now. So मेरा Hmm. ये perspective है कि उसको वो मिल रहा है, वो उसका होगा. But at Hmm. the same time, if I start finding out कि यार उसको क्या मिल रहा है, Hmm. then I might start thinking that what I did not believe in कि यार he Hmm. doesn't deserve it.
कि यार उसको, वो तो डिजर्व नहीं करता, हम्म, उसकी सैलरी मुझसे क्या ज्यादा क्यों है, या वाई इज ही ऑन बिल्कुल। अ बेटर पोजिशन देन मी। सो इट डज, आई थिंक दिस इज जस्ट प्योर नेगेटिविटी। और ये तभी आती है व्हेन या यू या इंडल्ज योरसेल्फ इन दीज डिस्कशन, जिसके that's a अंदर ये सब very गॉसिप हो रही है। brilliant point. Yeah, that's a very brilliant point you make. It's called having not having an opinion about everything. I remind myself that from That, time to and time. True. also there is See, this Zora, terminology you called don't. Yeah. fear of uh, fear of missing out, FOMO। FOMO. वो Yes. भी And रिलेटेड ही है। एंड यू, इफ यू ओवरकम दैट, कि यार जो हो रहा है वो होता रहे, मुझे कुछ फर्क नहीं हम्म, पड़ेगा, मुझे, मेरे लिए जो मैं कर रहा हूँ वो जरूरी है। इफ माई फ्रेंड्स बिल्कुल। आर गोइंग टू देखें। हुंजा और बिल्कुल। कश्मीर वेरेवर, अभी मेरा टाइम नहीं है, अभी मैं नहीं जा रहा, परहैप्स फॉर वट एवर रीजन, मेरे पास छुट्टी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज बिल्कुल। नहीं है, बाद में चला जाऊंगा, हम्म, मैं कुछ और इंपॉर्टेंट कर लूँ इस वक्त लाइफ में। बट इफ आई बिल्कुल वुड बिल्कुल। सिट एंड थिंक अबाउट इट, यार वो लोग मजे कर रहे होंगे, इट्स नॉट गोना हेल्प मी, इट्स जस्ट गोना bring my ट्रू। energy down. So this is, I think, ट्रू one of the ट्रू। important things that we need to implement in our lifestyles, and I हमें अपने ब्रेन को उस तरीके से ट्रेन करना चाहिए, ताकि so that we can हम्म, thrive in our life। यही सब सोचते रहेंगे दूसरे लोगों ने ट्रू। क्या किया, वो क्या बात कर रहा ट्रू। है, doesn't help at all। देखिए, with regard, absolutely, with regard, and I'll just add on to what you just said brilliantly. Uh, देखिए, with regards to FOMO, your whole life, just have to remind yourself, your whole life is a series of opportunity costs. Opportunity cost का पता है, इकोनॉमिक्स में कभी पढ़ा होगा कि आप किसी एक चीज के लिए, देयर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ। अगर आप एक चीज को चूज करते हैं तो आप, यू आर ऑलवेज लेटिंग गो ऑफ समथिंग एल्स, और यू आर ऑलवेज मिसिंग आउट ऑन समथिंग एल्स। It is going to be a part of your life. So FOMO is part of my life. It is going to be part of your life. Maybe stop seeing it as something that you're missing out on. Or if you are fearful कि यार आप miss out कर दोगे, why don't you put it on your vision board or put it on your bucket list? कि I'll get to it. ठीक है, but rushing into it doesn't make sense, and obsessing over it doesn't make sense. But I think this has to Uh, do with your level of maturity, how yeah, you kind of get developed in life. And you cannot बिल्कुल just teach it बिल्कुल। to anyone। मैं आपको सिखा नहीं सकता, अगर if you are like हाँ that, if जी, you feel interested in बिल्कुल it, बिल्कुल। या आप उससे ये आपको इफेक्ट हो रहे लाइफ हैं, सिखाती है। ट्रू ट्रू। तो यू लाइफ कैन आपको नॉट। सिखाती है, देखिए मुझे लाइफ में। हाँ, गुड। 10 साल पहले मुझे नहीं था, मुझे कोई कितना भी बोलता मुझे फील होता था मैं। और हमारे ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल। भी तो अनफॉर्चुनेटली वही है ना, एज ह्यूमंस हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, बड़ा घर, महंगी गाड़ी, उसके बाद फिर और दूसरी हम्म। कोई गाड़ी, अच्छे कपड़े, फिर ब्रांडेड कपड़े, फिर ब्रांडेड बच्चों कपड़ों का के बाद फिर स्कूल, और बेहतर। कॉलेज, यूनिवर्सिटी। सो दीज या आर आर ऑब्जेक्टिव, जब वी आर व्हेन वी आर रनिंग आफ्टर दीज ऑब्जेक्टिव्स, तो ये चीजें तो इफेक्ट करेंगी ना मुझे। सो मैं होता था, हाँ, बट बिल्कुल finally I am pretty content with my, and I still have to work a lot on myself, but at the same बिल्कुल time I बिल्कुल। think कम से कम मैं, चलो यहाँ तो पहुंचा, by the age of बिल्कुल 36 I am बिल्कुल। right now, मैं, चलो मैं पता है पहुंचा तो क्या सही। चीज है, मुझे पता है खुशी किस बात की होती है, फॉर द पीपल हु आर ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, एंड आई बिलीव के यू विल अग्री विथ मी ऑन दिस, कि देखिए हमारा जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है ना, वन थिंग जो हम बहुत रिलीजन में भी बहुत ये थीम जो है एक्सप्लोर किया जाता है, आप सूफी कलाम वगैरह भी देख लें। द थिंग इज कि जो हमारा एसेंशली जो हमारा ह्यूमन एक्सपीरियंस है ना, इट्स पीपल आर वरीड कि इट्स फिल्ड विद सफरिंग। हर हर कोई ये रखता है माइंड में कि यार human life or human experience is one of suffering, or suffering is a very common theme in religion, it's a very common theme in spirituality and all of that. You know what, देखिए आपका ह्यूमन एक्सपीरियंस, यू वांट टू थ्राइव, और मैं ये नहीं कहती कि, अगेन देखो जहाँ यहाँ पे वो आता है टॉक्सिक पॉजिटिविटी वाली बात आ जाती है। मैं, हमारा ये मकसद राइट नाउ, हमने जितनी भी बातें की वर ओवरटली वेरी पॉजिटिव, एंड दैट्स अ गुड थिंग कि समटाइम्स यू नीड टू रिमाइंड योर सेल्फ। Toxic positivity is when you undermine the shadow side of the human experience, which is the suffering, which is the hardships, right? मैं ये नहीं कहती कि सफरिंग और हार्डशिप्स जितनी आपकी जिंदगी में लिखी है, आपके आपके लिए जितनी लिखी हुई है उतनी मेरे लिए नहीं लिखी हुई। इट्स वेरी डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, एंड वी ऑल हैव टू गो थ्रू इट। यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट, नंबर वन, कि हार्डशिप्स हैं, लाइफ इज नॉट इजी, माई पाथ इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स, एंड दैट्स ओके। बट पीपल ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट इनविंसिबल नहीं हो जाते, उनको कोई मैजिक वॉन्ड नहीं मिल जाता कि जो है उनकी स्ट्रगलिंग जो है या तो नंबर में, क्वांटिटी में या क्वालिटी में रिड्यूस हो जाती है। नहीं, कुछ नहीं होता, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इज दैट पीपल ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, आप किसी को भी उठा के पूछ लें, आपको ना वो हमेशा उनकी पर्सनैलिटी में दे विल एग्जूड कि वो जहां पे भी है ना, जैसे भी है, जितनी भी चीजें हैं और जितनी चीजें नहीं है उनके पास, वो आपको खुश, मुतमईन और सेटिस्फाइड नजर आएंगे।
खुश, मुतमईन और सेटिस्फाइड नजर आएंगे। एंड खुश और मुतमईन और सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या है कि दे हैव फाउंड इनर पीस। दे हैव फाउंड इनर पीस। ये जो आप जितनी भी जिद्दोजहद कर रहे हो, आपको रिलीजन, जरूरी है कि वेस्ट की तरफ से हमारे पास सेल्फ हेल्प आए। रिलीजन में भी हमको बहुत कुछ, ये इमोशनल इंटेलिजेंस इसी में है, एनएलपी इसी के अंदर है, रिलीजन आपके इस्लाम में है। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सेल्फ थॉट, हाउ योर इमोशंस, everything you want is very, everything is within your reach, मैं वही बट कह रही हूँ। अनफॉर्चुनेटली तो प्रॉब्लम इज दैट कि हम लोगों को अपनी मर्जी की चीजें रिलीजन में से यू निकालते स्ट्राइव। हैं, हम वो उसको कर बिल्कुल। लेते हैं, लेकिन यहाँ ये बताया जा रहा है कि a wholesome life and a good life is in simplicity of things. तो वो क्यों नहीं हमसे हो रहा? When we look back at our prophet and his life, हम ये सुन्नत है वो सुन्नत है, वो क्यों नहीं कर रहे हैं हम? वो क्यों नहीं हो रहा हमसे? और पर मैं उसी आपको पता चक्कर क्यों। में जी, नहीं नहीं नहीं, बताया, प्लीज कंप्लीट योर इट्स थॉट, जस्ट सॉरी। दैट के यही तो चक्कर है सारा। इन चक्करों के पीछे व्हाट इज हैपनिंग इज वी आर नॉट, हम वो चीजों को चेरिश नहीं कर रहे जो विच आर अराउंड अस। अभी या पिछले दिनों बड़ी एक या अच्छी कॉन्वर्जेशन हो रही थी, उसमें यही बात हो रही थी कि अगर मेरा पॉजिटिव माइंडसेट होगा ना, आई वुड थिंक कि यार सब चीजें अच्छी हैं, तो मुझे यही दीवारें, यही दरो दीवारें, यही छत, यही सब चीजें अच्छी लगने लगेंगी। अदरवाइज अगर मुझे बुरा लगना हाँ होगा और बिल्कुल, इफ आई आप एम इन अ जहां पे भी बैड मूड, होगे तो ना, मुझे ये भी बिल्कुल जहर लगेगा कि मैं यहाँ क्यों बैठ, यहाँ व्हाई एम आई नॉट आउटसाइड डूइंग समथिंग। और बिल्कुल ट्रैफिक क्या है, व्हेन यू आर इन अ गुड बिल्कुल। स्टेट ऑफ एंड माइंड, वुडंट ट्रैफिक इट में जस्ट फंसे हुए हो आप, रिलीव तब भी योर आपको माइंड। यू विल फील गुड अबाउट इट। मैंने आई पर्सनली फेल्ट इट कि मेरा मूड एग्जैक्टली, खराब है, यू तो मैं कुड हैव ट्रैफिक में नॉट भी सेड इट बैठा हुआ हूँ बेटर। और मैं उल्टी सीधी आई एम जस्ट स्वेरिंग एट पीपल, ये ऐसे जा रहा है, वो सही नहीं चला रहा, ऐसा क्यों है। और जब मेरा अच्छा मूड है, मैंने आई रोल्ड अप माई विंडोज और मैंने अपने म्यूजिक लगाया हुआ है एंड आई एम जस्ट लाइक इन माई ओन जोन, और मुझे सब अच्छा लग रहा है, और वो लोग लड़ रहे हैं बिल्कुल ट्रैफिक में आगे, बिल्कुल मैं बैठा हूँ, मुझे लाइक क्या कोई मसला नहीं है, बैठा हुआ है गाड़ी में, कुछ मसला थोड़ी, आई एम हेल्दी, आई एम डूइंग एब्सोल्युटली ऑलराइट, 15 मिनट बाद पहुंच बिल्कुल जाऊंगा, कुछ नहीं हो रहा, नथिंग इज हैपनिंग टू मी, आई एम बिल्कुल सेफ, आई एम बिल्कुल। साउंड, आई एम आई सिटिंग हियर, आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, कोई मसला नहीं है। इट्स जस्ट अबाउट ट्रू मूड एंड योर माइंड सेट, हाउ यू सी ट्रू थिंग्स ट्रू। अराउंड यू। So if you start भाई आई cherishing what you पर्सनली, have, things life would be easier. But if we keep on या chasing या things, because दैट्स unfortunately ऑल you यू just वांट, mentioned राइट। West. Exactly, but आपने भी मैं हम्म वेस्ट का मेंशन किया, अनफॉर्चुनेटली ये वेस्ट की तरफ की ही चीजें हैं मेनली, जिनको देख के हम लोग एस्पायर होते हैं या इंस्पायर होते हैं, एंड वी वांट टू कॉपी देम। एंड आपको एक मजे की मैं बात बताता हूँ, एक या ट्रू। टॉक अबाउट इट वेरी ऑफन कि जितने भी ये लोग हैं जिनको देख के हम अपनी लाइफ को मुश्किल बना रहे हैं, अपने जो पैसे हम कमा रहे हैं वो सारे स्पेंड वेस्ट, आई वुड हम्म। यूज द वर्ड वेस्ट, वे वेस्टिंग इन ब्रांडेड थिंग दिस एंड दैट, कि हमें अच्छा लगना है, ये लगना है, वो लगना है, महंगी गाड़ी लेनी है, जिनको देख के कर रहे हैं, हु आर एक्चुअली नॉट लिविंग दोज their life like that. Most of the people who are the most successful ones in the world, जिनको हम एक्चुअली फॉलो करते हैं, 4-5 नाम है, मार्क जुकरबर्ग, टिम कुक, ये बिल गेट्स वगैरह, अगर इनको देखें आप वो रह कैसे रहे, तो यू वुड बी सरप्राइज टू सी हम्म कि वो लोग कोई हर वक्त सूट पहन के नहीं बैठे हुए हैं, वो कोई महंगी गाड़ी में हर वक्त घूमते नहीं रहते, दे हैव द हम्म सिंपलेस्ट लाइव्स, इवन दो दे मस्ट बी स्पेंडिंग इट इन अदर थिंग्स, बट एटलीस्ट नॉट इन वट वी, जब वो टीवी पे आ रहे हैं तो दे हैव टू लुक देयर बेस्ट। ऑफ कोर्स आप उनको उस तरीके से, बिल्कुल तो इट बिल्कुल इट इज नॉट, और वो लोग अपने पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो लोग अपने पैसों को ग्रो बिल्कुल करवा रहे हैं, तो वो इस तरीके से अपनी लाइफ बिल्कुल को इम्प्रूव बिल्कुल। करें। हम उनको की कॉपी करने के चक्कर में अपनी करंटली हमारे पास जो चीजें अवेलेबल हैं, हम उनको ओवरलुक करके उन जैसा बनने के चक्कर में वी आर। एंड एक और मजे की बात मैं आपको बताऊं, सो आई डू टॉक अबाउट इट टू, कि फॉर एग्जांपल जुकरबर्ग वगैरह ये लोग का क्या है, इफ यू एक्चुअली सी देम, यू विल फाइंड देम वेयरिंग द सेम सेट ऑफ क्लोथ एवरी डे इन एवरी कॉन्फ्रेंस। जुकरबर्ग को देखें, ही वेयर्स दिस ब्लैक शर्ट, हम्म ब्लू पैंट्स, ब्लैक शूज, व्हाई, ही शोड हिज हम्म। वार्डरोब वंस, उसके पास वो 20 ब्लैक शर्ट्स एक जैसी और 20 ब्लू शर्ट्स रखी, पैंट्स रखी हुई है, बिल्कुल वो वही पहन रहे हैं रोजाना। क्यों पहन रहे हैं वो? बिकॉज ही हैज बिल्कुल लर्न द फैक्ट दैट इट डजंट चेंज हिज रियलिटी। he is rich, everybody knows it. ट्रू। How does it? It does not matter. And if you बिल्कुल start wasting बिल्कुल। his money on his clothes and everything, he's not हम्म gonna, वही वाले पैसों को वो कहीं इन्वेस्ट कर रहा है, उसको उससे कोई ना कोई अच्छा आउटकम आ रहा है। सो हमारा मसला यही है कि टू इम्प्रेस अदर्स, बिल्कुल। टू टू गेट एक्सेप्टेड, व्हाई डू यू वांट टू गेट हम्म एक्सेप्टेड बाय अदर्स? उनको नहीं करना, वो नहीं करें, व्हाई डू यू नीड देयर एक्नॉलेजमेंट, यार एक्नॉलेज मी, सी आई ट्रू। एम लुकिंग गुड। Your acceptance for yourself should be enough for you. Your validation, it should be the only one that should matter. I learned somewhere कि what others think of me is none of my business. I try to remind myself that जब भी मुझे दिमाग में आता है ना कि यार वो क्या सोचेगा, या मैं ये ठीक तो नहीं लग रही, मैंने अगर ऐसा बोल दिया तो ये इंटरेक्शन ऐसी होगी, as soon as I get into overthinking and I realize कि I'm thinking about someone else, उनके लेंस से मैं चीजों को देख रही हूँ,
आई डोंट, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस, व्हाट अदर पीपल थिंक इज नन ऑफ माई बिजनेस। एक बहुत ही क्विंटन टेरेटिनो का एक बहुत अच्छा कोट है। He says कि I create for myself. Basically, he makes movies and stuff. Right? He's talking about movies. Yeah. Yeah, he says I create for myself. Everyone else is welcome. मैं जो भी create करता हूँ movies, films, XYZ, I do it for myself. Everyone else is welcome. I don't care. You like it, you take it. You don't like it, जाओ बाजू में जाके किसी दुकान से देख के आओ। आई डोंट गिव अ डैम। आई डू दिस फॉर माई सेल्फ। मैं अपनी जात के लिए करता हूँ जो भी मैं करता हूँ। ठीक है। तो मार्क जकरबर्ग वगैरह जो भी है, जो अगर अपने लाइफस्टाइल में बिल्कुल रिलैक्स्ड है, दे आर डूइंग इट बिकॉज दे आर डूइंग इट फॉर देमसेल्व्स। उनको नहीं परवाह है कि वो गुची नहीं पहन रहे हैं और उन्होंने प्लेन टी शर्ट पहनी है। दैट्स ओके विद देम। बट आईड लाइक टू ऐड समथिंग हियर एज वेल एंड लेट मी maybe introduce you to another perspective and see what you think about it. देखिए, I feel like there's this concept of कि successful, mature people have the simplest lives. I feel like that's just an opinion. That's not a fact. And there are people who are mature and still you can be a mature person. See what I'm trying, and I'll tell you what I'm trying to get So at. that is You can subjective. still be a mature It person varies. and yeah, and earn a lot of money. And they can, and why I'm saying this, मैं ये टॉपिक क्यों छेड़ रही हूँ, ये सिर्फ इसलिए नहीं छेड़ रही कि मैं आपको कॉन्ट्रडिक्ट करूँ कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू के बरअक्स ये भी है कि people like to spend money and they like to wear Gucci and all of that. Hmm. No. What I'm trying to say is this, कि people have an innate fear कि, और ये हमारे रिलीजन से हम सीखते हैं एंड आई थिंक हम गलत इंटरप्रेट करते हैं कि हमारे, आई नो कि हमारे रिलीजन में कि भाई एक स्पिरिचुअली मेच्योर या एक मेंटली मेच्योर पर्सन इज समवन जिसको जो सादगी पसंद होता है, राइट? यू हैव टू लेट गो ऑफ द मटीरियल एंड गेट डिटैच्ड फ्रॉम द मटीरियल टू बी स्पिरिचुअली एनलाइटेंड, राइट? बट आई फील लाइक व्हाट पीपल मिस्टेक इज दिस के ये जो टीचिंग है ना, ये गलत नहीं है मगर ये बहुत एडवांस लेवल की टीचिंग है। आप पहले बेसिक तो करो एंड द बेसिक थिंग इज दिस कि आप पहले पैसा कमा के तो देखो, आप खर्च करके तो देखो, आप एक्स्ट्रावेगेंट तो होके देखो। Earn money. People are scared of wishing for money. They are scared of wishing for wealth कि नहीं, this is evil. And next time, I hope अगर आपको ये पसंद आए फहद, we can do a podcast on money mindset or something like that, कि money is a mindset too. And आप money को as a evil ना देखें, और if you reframe it as a form of abundance, देखें इस दुनिया में आपको अल्लाह ताला ने हर रिसोर्स दिए ताकि you can use it for yourself to advance right in life. Money is a part of that too. और evil के चक्कर में कि हम greedy हो जाएंगे, हम greedy हो जाएंगे, हमें दोजक मिलेगी एंड में, we don't even give it a chance. हम उसको ख्वाहिश भी नहीं करते, हम डरते हैं, और फिर जिसके पास होता है उसको देख के भी हम जलते हैं, राइट? उसको देख के भी हमको ऐसा होता है कि ये कैसे जल्दी आ गया, इनके पास जरूर कुछ ब्लैक ब्लैक मनी व्हाइट वाला सीन होता होगा। लिटरली ऑन माय विजन बोर्ड आई हैव दिस पिक्चर ऑफ दीज डॉलर बिल्स की ना गड्डियां पड़ी हुई हैं, ठीक है? Yeah. आई नो इट साउंड्स फनी बट द थिंग इज कि देखिए, आप खाली ये सोचें कि अबंडेंस, इफ यू वांट टू थ्राइव, राइट? थ्राइव मीन्स कि आपको जो पूरी अर्थ में रिसोर्सेज थी आप उसका फुल इस्तेमाल करें, और आप कॉम्पिटेंट बने, कि आपको स्किलफुल बने, कि आपको आता हो उसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे रिजर्व करना है, कैसे रेनी डे के लिए बचाना है। नोबडी इज सेइंग कि डोंट लर्न टू सेव, nobody is saying कि don't learn to save for a rainy day and to be cautious, but at least when you spend, don't feel guilty about it. At least when you desire it, don't feel guilty about it. Don't think it's evil. आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है कि आप राइट और रॉन्ग में फर्क पता कर सके, और कोई बात नहीं, चले मान लेते हैं कि इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अबंडेंस आप थोड़े ग्रीडी हो जाते हो, ओके, आप हो गए ग्रीडी, कयामत तो नहीं आ गई, ठीक है। क्या होगा, जो लोग ग्रीडी होते हैं, क्या उनको उनको पता नहीं चलता, उनको क्या फीडबैक नहीं मिलता फ्रॉम द यूनिवर्स कि देखो यू आर बीइंग ग्रीडी, आज आपने ये ले लिया बट आपने दो लोगों का नुकसान किया और आपने अपने रिश्ते खराब कर दिए। You will start be getting unhappy very soon, right? या you will start seeing things going wrong. आपको यूनिवर्स आपको बता भी देती है कि हाँ करें, तुम ग्रीडी हो रहे हो तो हम मिलके तुम्हें और भी ला के देंगे, बट देखो फिर ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो ओके, यू डोंट ट्रस्ट योर सेल्फ कि यू कैन लर्न एंड देन कोर्स करेक्ट, ठीक है मिस्टेक हो गई मुझसे, बट आई नो हाउ टू कोर्स करेक्ट, इट्स ओके, आई गेट बैक टू द बैलेंस, आई कैन क्रिएट बैलेंस। और देखिए इस तरह भी सोचें, इस तरह भी इस बात को देखें कि डू यू नो कि द कॉन्सेप्ट ऑफ चैरिटी हमारे इस्लाम में क्या है कि आप अगर इफ यू आर वेल ऑफ एंड यू हैव बेटर रिसोर्सेज, यू हेल्प दोज हु डोंट हैव इट, राइट? इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट कि आप उनको उनके साथ शेयर करें वेल्थ जिनके पास नहीं है या हु हैव लेस ऑफ इट।
So can you, is it wrong to wish कि I want to be a giver and not a taker? Right? Being a person who operates from a place of abundance is the person जो कि फिर औरों में भी शेयर करता है, मल्टीप्लाई करता है, औरों में भी शेयर करता है, औरों को भी बेनिफिट करता है. So is that a wrong thing? The person who creates employment opportunities, is that a bad person? No. आप अपने लिए तो करोगे, आप अपनी फैमिली के लिए तो करोगे, तो इसमें गिल्ट जो है ना, वो हमारे पता है, इवन व्हेन यू ट्रिकल इट डाउन टू ऑन अ पर्सनल लेवल, इट डिटर्मिन्स योर स्पेंडिंग हैबिट्स एज वेल. कि आपको, आप अपने आप पे नया टीवी खरीदने के लिए, पता है आपकी बहुत सी स्पेंडिंग हैबिट सिर्फ ये नहीं होती. स्पेंडिंग साइकोलॉजी अगर किसी ने पढ़ी हो, कि इट्स नॉट जस्ट दिस के इसकी वैल्यू जो है वो, इज इट वर्थ द वैल्यू आई एम गेटिंग, द मनी दैट आई एम पेइंग, इज इट वर्थ द वैल्यू आई एम गेटिंग. ये सिर्फ खाली इसका डिसीजन मेकिंग नहीं होता. On a very core unconscious level, it's also about, am I worth it? Am I worth that new TV or that luxury? और ये अगर चले गए तो ये क्या, मेरे पास देखो, there's this two ways to look at it. ये मेरे पास पैसे अगर मैंने खर्च किए, या तो ये मेरे से चले जाएंगे, मैं माइनस में आ जाऊंगी, या ये कि अगर ये मेरे पैसे, दूसरा ऑल्टरनेटिव ये कि ये पैसे अगर मेरे पास से चले गए, कोई मसला नहीं है, ये डबल होके वापस मेरे पास आएंगे. This money is going to come back to me. You get it? There's a difference. There are people who operate from a place of scarcity, and there are people who operate from a place of abundance. When you are someone who's operating from a place of scarcity, कि there is not, scarcity means there is not enough for everyone. And उस वक्त क्या होता है कि भले उस वक्त आपके हालात ऐसे हो, that's why you are from that place, but I believe कि money is a mindset, attracting abundance is a mindset. कि from when you're in a place of scarcity ना, you sharing is not on top of your mind because there's not enough for everyone. Say क्या कहते हैं, charity is not on top of your mind because there's not enough for everyone. आप डर इसमें रहते हो कि ये अगर ये जो मेरे पास है, अगर वो भी मैंने दे दिया, तो मैं माइनस में आ जाऊंगी, नुकसान में आ जाऊंगी. आपका माइंडसेट ये नहीं होता कि ये चीज घूम के मेरे पास आएगी, क्योंकि देर इज नॉट इनफ, देर इज नॉट इनफ, देर इज नॉट इनफ. और फिर क्या होता है कि आई एम नॉट वर्दी कि मेरे ऊपर पैसा खर्च किया जाए, क्योंकि देर इज नॉट इनफ. You understand? And you have to break away from that. Napoleon Hill की जो book है, Rich Dad Poor Dad, one brilliant thing he says in that book, I believe कि वो quote उधर से ही है. He says, if you are born poor, that's not your fault. But if you die poor, that's on you. And I've decided for myself, for better or worse, I don't want to die poor. I want to die comfortable or rich even. I'm not going to feel guilty about using that word. मुझे rich होना है, मुझे पैसा कमाना है, फिर आपको जैसा भी लगे. And you know, it is said that one of the best investments you can do is to invest in yourself. Whatever you put Yeah. in on And yourself, it stems from किसी न self-worth किसी too. तरीके से आपको वो, it gives you improvement. कुछ भी हो सकती है वो, it could be anything. Unless you are in not spending on negative things. Um, Most of the times, if you're traveling, then you make new experiences. You learn new Hmm. languages, you find out about other cultures, you learn survival tricks Mm-hmm. and stuff. So Mm-hmm. इसके अलावा अगर if you are Mm-hmm. buying yourself better clothes, Yeah. then you appear better, you are taken better in various places and situations. So uh, investing in Mm-hmm. yourself is one of the best investments one can do. Absolutely. And abundance is a mindset. Money is a mindset. I learned this the hard way. मैंने जब first time इसको पढ़ा, I was like, यार ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था. I, of course, even I was like, यार इस चीज के पैसे नहीं है, ये तो बहुत कोर्स महंगा है. I'm the kind of person I like to learn new skills. And this life coach said कि she said कि for example, she was talking about pricing your services and charging premium, right? People feel guilty कि मैं क्या charge करूँ क्या नहीं करूँ. She said कि यार she was talking about getting help, right? She said कि मैं coach हूँ and I help coaches become better coaches. She was helping coaches build up their businesses, and her courses were very expensive. ठीक है? So she said, I know कि the price point is almost like reading my mind. She said, I know the price point is a cause of concern for you, but try to understand कि अभी भले आपके पास इतने पैसे नहीं, और you're worried कि मैं भरूंगी कैसे इसको किस्तों में, या आई डोंट हैव द उसकी नॉलेज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है जितना वो डिमांड कर रही Hmm. है. उसका राइट है Hmm. उतना डिमांड करना, बिकॉज दैट्स द वर्थ ऑफ हर नॉलेज. Absolutely. शी सेड कि हाँ, बट शी सेड कि इसी
when you don't have enough, उसमें जब आप spend करते हो ना, to gain something that you know is going to be valuable You for you, value it आप more. यकीन करें, you can get that investment back. You will be able to get 4 times of that back. बट वो जो क्रिटिकल मोमेंट होता है ना, यार मेरे पास पैसे नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, अगेन प्रायोरिटाइजिंग. How badly do you want this? How badly do you want this in your life? How badly do you want your best self, your higher self in your life? How badly do you want your dream And life? you have to be It's a little about that. bit crazy in order to Oh yes. achieve anything in Oh, life I love at how all. the Gen Z say this. Have you heard this? The Gen Z say, "Delulu is so Lulu." Have you heard of that? I have been hearing that recently, and It's to be very delusion. honest, I do Delusion not is know the what it even solution. means. Yeah, It how is a means delusion a delusion. solution? Delusion is the solution. How? Delusion is the solution that you have to be, basically talks about the importance of conviction and absolute self-belief in you. You have to be delusion enough to think that you're going to get that, right? I have to have such a strong self-belief that I can make it. I can be, for example, I'm into, I मेरा अगर मेरा career goal है कि I want to be Yeah, a I wonderful understood the actress, point, but I want to be award winning, isn't and I'm delusion a a nobody right. negative word? Yeah, delusion. Delusion Isn't it a means कि negative? आप जो है, Isn't you it a believe in negative something, word? you are crazy to believe in something. Depends on the context. When you say, for example, when you want to say someone is crazy, yeah, when you want to say someone is crazy, you say that person is delusional, right? He's crazy, he's talking crazy. But this is a positive spin on the word. Okay, you have to be delusional, which means, and this is used metaphorically, it's an exaggeration of an idea. Okay, you have to be literally crazy, crazy in having such a strong self conviction and self belief that you can have what you right now think you are not capable of. Right? So that's the solution. And basically, that means is that when you have a strong self belief, it makes you a very क्रिएटिव पर्सन, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्वर. फिर आप बहुत ही लीनियर वे में अपने प्रॉब्लम्स को नहीं देखते हो. यू चेंज द डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड यू स्टार्ट कमिंग अप विद क्रिएटिव सॉल्यूशंस. सही है? But yeah, this was fun, man. Thank you, Fahad. No, truly, thank you for giving me the opportunity. Really, thank you for reaching out to me and giving me a chance to experience this for myself. It was truly fun, and I had a pleasure getting to know you, Fahad. Truly. You're welcome. And I'm really happy to meet you, such a positive person who can actually bring positive change in other people's lives. And I would encourage you to be involved in more activities like this. Perhaps you have to engage with more people on LinkedIn and other platforms. That's how you get to meet new people and explore new opportunities. True. So thank you very much. Thank you And so much. And my pleasure, absolutely my pleasure. And thank you for sharing your platform with me and allowing me to share my voice with everyone else. I'm truly you're humbled. Thank you welcome. so much. You have a good This day. was wonderful. Take care. All right. You too. Have a nice rest of the day. Bye bye.